Corbett National Park nestles on the foothills of the Himalayas in Uttar Pradesh. Situated 128 kilometers short of Nainital, it is India's first national park. The park stretches over 500 square kilometers of dense forests of sal and grasslands. I have visited the park many times, but the magic still holds. Each visit, I see a new dimension of Jim Corbett, the man behind and the park he created. Jim Corbett was the son of the postmaster of Nainital. Jim was addicted to shikar from age 10. Once on shikar with 3 army officers, they came upon thousands of waterfowls. Firing started indiscriminately, and in minutes, 300 fowls lay dead. From that day, Jim developed an aversion to this type of shikar. The waterfowl may taste delicious, he ruminated. But what would the hunters do with 300 birds? Why then did they take life so ruthlessly? Couldn't their senses distinguish a lake from a battlefield? Jim resolved never to kill a beast without adequate reason. The trigger will be pulled only to enjoy a delicacy or to destroy a dangerous beast. That day, Jim was transformed from a destroyer to a protector of wildlife. Jim was convinced that no jungle beast was dangerous while it lived in its natural habitat. Gora Sadhu to the villages of Garhwal and Kumaon valleys, Jim considered it his sacred duty to kill man-eaters, a duty he faithfully carried out till his last days. In 1936, the Haley National Park was established near Ramnagar, a project in which Jim had a major hand. After independence, it was renamed Ramnagar National Park. Later in 1956-57, the state government gave it its present name, Corbett National Park. The park is an integral part of Project Tiger and has about 100 of the endangered Bengal tiger living inside. Looking out for tigers while perched on top of an elephant, taking you into thick forests is by itself a unique experience. Sounds of sambar deer calling with short nervous barks indicate the presence of a tiger in the vicinity. The first time I saw a tiger from atop an elephant, my hands were trembling while I tried to shoot with the camera. Though I knew that to the tiger, a human on an elephant is merely an appendage atop an animal too large to kill. The roar of the tiger made me freeze with fear. As I zoomed in those strong jaws and broken stripe pattern, I was filled with a great sense of wonder and admiration for the supreme predator of the jungle. When you spot a tiger in Corbett, an increasingly rarer species as years go by, the excitement in the air is infectious. Even families of mahouts troop in to take a peek. The expectant look on the photographer's face contrasts with the pure joy of the mahout who first spotted the tiger.
the population of tigers is dwindling due to poaching during the off-season periods of July to December. Poachers take away more than the animals. They undermine an already precarious natural balance. They take beauty and leave only waste. There are other dangers too. Forest fires can destroy the tiger's habitat. This picture of Mota Sal is a reminder of the fire of 1980, in which close to a quarter of the forest was destroyed. Though Corbett is promoted as a tiger reserve, it has a rich abundance of other wildlife and birds which attract the wildlife lover. The rare fish-eating, long-snouted ghariyal can be seen basking along the sandbanks and pools of the Ram-Ganga river. I did not know there were so many species of deer in India till I spotted the variety in Corbett. The chital or spotted deer appeared almost all around. Sambar deer is also easy to spot. The hog deer prefers the thick undergrowth of elephant grass. Bird life is also in abundance, with rare birds coming into view to the delight of bird watchers. Corbett is home to 580 species of birds, including waterfowl, woodpeckers, raptors, pheasants, etc. A typical day at Corbett starts with an elephant ride, followed by hot parathas while watching monkeys sunning themselves just outside the dining hall. During the day, you can go to the watchtower or browse at the well-stocked library. The watchtower gives a good panoramic view during the day. Noontime and you can see the mahouts giving their elephants a 2-hour bath. Mahout-elephant relationship is never that of man and servant. Mahout must earn the trust of the animal and reinforce the bond daily while bathing it. In the afternoon, you can go out on a jeep or take another elephant ride through non-motorable territory. As darkness falls, you can sip tea in the open while the elephants, now shorn of their howdahs, enjoy the warmth of the fire. Corbett's recent history has produced heroes too. When Subedar Ali survived a tiger attack in which part of his skull was torn away and he had to spend a whole year in hospital, the only request he made to the UP government was that he should be allowed to continue in Corbett as a mahout. Several years after the incident, Ali spoke to us. मैं करीब 9 साल का था जब मैं आया था। इसमें करीब 36 साल के माली में हो। Since when have you been a mahout? ये चारा कटे का तो काम तो काफ़ी पहले शुरू से चलता था, शौक बहुत था, लेकिन ये करीब 13-14 साल हो गया, लगभग 15 साल माहौत का काम करते हैं जी। बाकी उससे पहले मैं मालीगिरी हमारा भी यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ। अच्छा, मालीगिरी जी हाँ। करीब 79 में हमें माहौल बनाया गया। Who did you learn from? सब सीखने वाली तो बात यह है कि आप किसी के साथ भी हो जाइए, जैसे कोई जरा उनके साथ हो जाए, लेकिन ऐसा कोई उस्ताद नहीं बना कि जिसके पास मैंने काम किया। लेकिन जहाँ तक दवा दारू का सवाल है, वो किताब देख के ही बात बनती है। और किताब भी देख लिया और फिर उसकी आइडिया ना हो तब भी बेकार, लेकिन थोड़ा बहुत करके एक दूसरे से सब वो सही हो जाए। Wild elephant herds are down from the winter habitat during March-April. We ran into herds of wild elephants inside the forest, and the elephant we ride gets quite close to these. The mahout tries to take our elephant closer to the wild herd. Suddenly, there is a sensation of throbbing in the air, like that from thunder. Elephants talk to one another in a range of sound below that of human hearing. An audible snort, followed by sudden synchronous freezing,
is a warning that we have got too close. The mahout gets her elephant to withdraw. The herd disperses into the forest. We asked Ali his experience with the elephant in its various moods. तो कई देखे, लेकिन जैसा यहाँ का हाथी है, ये इससे तो खतरनाक हाथी यहाँ का है, देहरादून का, हरिद्वार का, इससे ज़्यादा खतरनाक का हाथी वहाँ पे। क्योंकि कई बार हाथियों को पकड़ा भी बच्चों को वहाँ पे, इसलिए डिस्टर्ब ज़्यादा हो गए वहाँ पे, इसलिए आदमी पे या गाड़ी पे ज़्यादा दौड़ते हैं वो मारने के लिए। बाकी यहाँ का हाथी तो ऐसा अभी तक ना कोई देखा गया है कि या ना ऐसा कोई हादसा ऐसा हुआ कि हाथी को अटैक किया या किसी पर्यटक को चोट आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। The elephant herd, led by matriarchs who crossed the path of the jeep, seemed to ignore our presence for some time. Soon, it was apparent that the adults were positioning themselves into an attack formation, and we had no option but retreat hurriedly. All the years that you've been living here, you must have experienced the forest at different levels. The romantic, the awesome. वो तो साहब ये थे कि मगर इस किस्म के तो कोई ना कोई से डर वाली तो कोई जंगल में कोई बातें नहीं थी, क्योंकि जब मैं छोटे से जब से जंगल में आना जाना शुरू था तो खौफ तो इस किस्म का बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये कुक्कू हमारे यहाँ एक था, हमारी स्टाफ का ही चारा कट था, उसको शेर ने मार दिया जब 82 में, तो उसके बाद फिर लोगों को खौफ हो गया। तो जब से कुक्कू का हादसा हुआ था उसके बाद जो भी हाथी इधर उधर जब भी कहीं भी जाता तो हाथी को बांध देता अपने पेड़ से। अच्छा। जब चढ़ता था। और उसके बाद फिर हमारा केस हुआ कि 84 में। What happened in 1984? 15 को मैं गया चारे को, तो उसी टुकड़े में गए जहाँ पे कुक्कू को मारा था उसने। अच्छा। ये सबसे पहले वो कुतब नाम का जो लड़का था, उसने कहा यार इसको काट लेंगे हो जाएगा। हमने कहा यार हाँ हो तो जाएगा, लेकिन उसने अपनी हथनी को उसी पेड़ से बांध दिया। हम चले गए, उससे थोड़ा आगे खड़े हो गए, तो हमने उससे कहा कुतब भाई यार कि मैं भी देख लूँ, थोड़ा काट लूँ। हमने कहा काट लो। हम गए तो उसने कहा अगर काटना है तो वो पास में लगा एक पेड़ से उसने बता दिया। मैंने जंगलात वालों का पास जो है कि 4-5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हाइब्रिड सी हो गई है कि अगर कोई करीब चीज़ है तभी कहते हैं बस यही है, दूर है तो यही है। तो हम गए तो करीब था 1-1.5 किलोमीटर का, मैंने देखा हुआ तो बेचारा तो अच्छा था, काटने लायक तो बढ़िया बढ़कर था। फिर हमने देखा कि हमारी इतनी कहीं बांधने की जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं दूर नाले में जैसे यहाँ से अमरूद का पेड़ है इतनी दूरी पे हम बांध दिया नाले में। हम चढ़ गए, पैदल आए, बीड़ी पीते हुए ऊपर गए, काट रहे थे। जब हथनी हमारी 1-2 बार बोली तो हमने समझा कि इसके पास चारा खाने को नहीं है, इसलिए बोल रही है। कोई खौफ नहीं कि यहाँ पे शेर हो सकता है या किस किस्म, कोई डर ही से नहीं। खैर कोई बात नहीं, काट के नीचे आ गए, हाथी भी जाके बैठ गए। लेकिन फिर नजर डाला पेड़ पे तो 2-4 डालियाँ आपस में फंस के ऊपरे डर गई थी। तो हमने सोचा कि इसको लगे हाथ उतार लाता हूँ। फिर हाथी वहीं बांधा, फिर आए पैदल, फिर चढ़ गए। वहाँ देखा तो मैं पहुँच नहीं पा रहा था उसमें। तो हमने सोचा कि एक डाली इसे झुकी हुई थी डाउन की तरफ को, तो हमने उस पर बैठ के हमने सोचा कि एक डाली से मोटा शाखा मार दूंगा ये, तो ये सारा चारा नीचे जाएगा। तो साहब अब इसके बीच के हमने बता सकते हैं क्या हुआ कि एक हम ये पैर दाहिना में लटक रहा था, बाएं पे हम बैठे थे। सोचा कि जैसे लपक के मार दूंगा इसको। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि वो डाली पे कुल्हाड़ी लगे या नहीं लगे, इतने में दाहिने करवट से आया, पकड़ा यहाँ पे और नीचे साथ में ले आया। नीचे वो गिरा, उसके ऊपर मैं गिरा। फिर फौरन उसने हमारे सिर पे हमला किया, जो कुछ करना हुआ। उसके बाद करीब 1-2 मिनट में, और उसके फौरन उसने घसीट के लेके चलता बना एक तरफ। तो वहाँ पे एक सियाल का पेड़ पड़ा था। हमने कहा कि मैं इससे दूर ना जा सकूँ, उसकी मैंने कौलिया भर ली। फिर कौलिया उसका पेड़ पकड़ लिया आपने? उसका पेड़ पकड़ लिया मैंने, क्योंकि पकड़े हुए यहाँ से था। लेकिन उसके मैंने कौलिया पकड़ उसके भर ली पेड़ को कि ये मछली से दूर ना जाऊँ। अच्छा, इस पकड़ उसको वजन लगा होगा, 2-4 किलो का वजन लगा होगा, उससे ज़्यादा लग नहीं सकता है। शेर तो बहुत ताकतवर होता है। उसने जो झटका दिया तो हम 3-4 फीट करीब दूर जाके गिरा। गिरना क्या था मैं संभल भी नहीं पाया, इतने में फिर आया और फिर पकड़ा, और करीब 21 रमेश बेदी साहब ने नापा है कि 21 फीट दूर वो उसके लालटेने की झाड़ी के पास ले गया। वहाँ दबोच के बैठ गया।
उसके एक नाखून यहाँ पे और एक यहाँ पे है, इस पे लगा था, दबो लिया उसने। फिर मैंने उससे हाथ जोड़ा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, सब कुछ करने के बाद लेकिन उसके दिल में रहम तो ज़रूर आया, लेकिन इसके इस बीच में ना तो कोई किस्म का हमें पेन हुआ, ना तकलीफ़ हुई, ना इस किस्म कोई डर सा महसूस हुआ, ना कोई बेहोशी नहीं, कुछ नहीं। जबकि घायल है, अब बिल्कुल इससे बिल्कुल ही खत्म कर दिया उसने, एकदम लाल हो रहा है। फिर मैं वहाँ से उसको कुतब कुतब को आवाज़ दिया कि कुतब हो सकता है आ जाए। कुतब को आवाज़ जब देखे ज़िंदगी बचने की, इतनी जल्दी वहाँ से वो आया, उसने हल्ला शोर मचाया। फिर शेर ने मुझे छोड़ा, फिर मैं उसको उठ के अपने हाथी को फंसाया, हाथी खोले, हाथी बैठे, फिर कमर पट्टा पाए तो हम उठ के बैठ गए। हाथी पे पहले लेटे हुए थे, फिर उठ के बैठे। तो हमने उससे कहा कुतब यार कि शेर तो पीछे पीछे आ रहा, मुझे यार आगे कर ले, क्योंकि कुछ थोड़ा सा वो होने लगा। तो उसने कहा कि अब तुम बेफिक्र रहो, हाथी खुद भाग रहे रेस्ट हाउस की तरफ और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस मजबूती से पकड़े बैठे रहो बस। खैर मैं ये जहाँ अभी गए थे सुबह के टाइम, तो इधर वाटर हॉल है मचान, जहाँ पे उस लाइन पे शेर चला गया। मैं इधर ओपन में आया तो यहाँ रेस्ट हाउस पे गए, वहीं रिसेप्शन पे, वहीं पे लोगों ने बताया क्या हुआ। हम ऐसे वहाँ से ये मौजूद थे वहाँ पे, एक आदमी और था, इन्होंने उतारा। हमने कहा मुझे चद्दर दे दो, मैं पहन लूँ, मैं नंगा हो गया था उसमें, क्योंकि शेर जो सब कपड़े एकदम खत्म कर दिए थे। खैर फट गए थे कपड़े, सब लाल हो गया है, बिल्कुल लाल। उतारा, फिर रंग डाल दिया होगा रखा ये गाड़ी में। वहाँ से उन्होंने पीरू मदारा जाकर मैं बेहोश हुआ, क्योंकि रामनगर में 15 तारीख को मैंने कहा कि आज मेरे घर मत बताना, कल जो बताना होगा बता देना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर 16 को हमारे घर में बताया। मैं काशीपुर एक हफ्ता अस्पताल में रहा, तो उन्होंने फिर डिस्चार्ज करवाया काशीपुर से, फिर मेडिकल ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली ले गए वो। फिर उन्हें राजीव साहब वगैरह ने भर्ती करवाया। फिर इलाज वहाँ करीब 11 साढ़े 11 महीना इलाज हुआ, लगभग सब मिला के, मंसूरी और दिल्ली मिला के। और उनकी कृपा है और खुदा का शुक्र है, कभी जिंदा है बस, और कुछ नहीं कह सकते के मामले में। When the tiger attacked, what defensive action did you take? के मारे, दांत काटे, हाँ ये सब उंगलियां कट गई थी, पूरा ये अलग हो गए थे, ये जुबान पकड़ ली थी उसकी। आपने उसकी जुबान पकड़ी? हाँ जी, पूरा फर्क तो पड़ा उससे कुछ ना कुछ। और उसको मुक्के भी मारे, दांत भी काटे उसके, उसके आँख में उंगलियां भी थी, लेकिन उस समय शेर क्या था, शेर ही था वो। तो यहाँ लोगों ने देखा, मैं तो कानपुर 2 बार जाके देखा, बाद में लोग पुलिस ले गए। मेरे बराबर हैवी टाइगर, मेरे यहाँ तक आ रहा था, मैंने पकड़ा हुए थे, मेरे बराबर आ रहा था, इतना ऊंचा। पिंजरे में बताते हैं लोग कि दहाड़ मारता था, तो लोग हिम्मत नहीं पड़ती कि पिंजरे को छुए कि ना। Did the elephant make any move when the tiger attacked you? अगर शेर बैठा तो अपना हाथ ले जाए तो वहाँ खड़ा रहेगा वो भी, अपना खाने में मस्त है, उसको ये पता ही नहीं कि शेर है क्या है, वो समझता ही नहीं है, समझते नहीं, क्योंकि हमेशा का काम है ना उनका देखना। अच्छा कभी कभी दौड़ पड़े या थप्पड़ मारे तो हाथी को डर से भी हो, कभी ऐसा वाकया भी नहीं हुआ कि किसी हाथी को झपट पड़ा हो, गिरा दिया हो। Having gone through this harrowing experience, how did you gather courage to come back and work here? राजीव गांधी साहब जो थे, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने वहाँ ओलंपिक की ऑडिटोरियम में मीटिंग हुई, उन्होंने वहाँ पे रखा, यहाँ CNPP की मीटिंग हुई, उसमें भी यही बात रखी उन्होंने कि तुम्हें नाम चाहिए, इनाम चाहिए। ये 5 मेंबर थे, राजीव साहब हो गए, बिट्टू सहगल हो गए, विजन सिंह साहब हो गए, 2 आदमी और थे। उन्होंने कहा कि तुझे नाम चाहिए, और आप जानते होंगे ऑल इंडिया डायरेक्टर के बात थी। तो अब किसी ने कहा भैया इनाम में क्या मिलेगा, नाम में क्या मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आदमी को घुमा देती है ना बात को। फिर ये राजीव साहब के यहाँ, उनके यहाँ पियो था एक, उन्होंने कहा साले तो इनाम के मार गोली के जैसा, मुझे इनाम चाहिए, हमें इनाम नहीं चाहिए, तुझे 1 लाख रुपए दे देंगे, घर में बैठा देंगे, फ़ायदा क्या होगा। तो उन्होंने फिर हमने उनसे ये कहा, अगले दिन जब टाइम आया तो मैं उनसे कहा मुझे पैसे से नहीं चाहिए साहब, मुझे नाम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुझे नाम चाहिए तो कॉर्बेट पार्क में तुझे काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, हम साहब ये काम कर लेंगे। तो उन्होंने ये CNPP मीटिंग में $500 और 1 मेडल, 1 सर्टिफिकेट उन्होंने दिलवाया था, बस इनाम मिला था, बाकी काम वही की काम चाहिए बस, ये उन्होंने रखा था। और ये इन्होंने पेपर, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बड़ा भारी एहसान मुझ पे रहा कि जो हमारी मेडिकल छुट्टी थी वो उन्होंने माफ़ कर दिया, बाकी इस किस्म के कोई इनाम अकराम नहीं कि कुछ दिया उन्होंने।
So it was caught finally? 15 फरवरी 24 को हमारा केस हुआ, 28 फरवरी के रात को पकड़ा गया। Why was the man-eater not rounded up and killed as was happening in earlier days? It seemed that this practice led occasionally to indiscriminate killing of innocent tigers. Since 1978, game wardens have shot man-eaters only after proper investigation and identification. आजकल एक टाइगर है हमारे पार्क की माध्यम जो है, वो तो बहुत है भी। बहुत दिख जाती है तो तबीयत खुश हो जाता है। इतना चौड़ा पंजा है, बहुत तगड़ी, इतना चौड़ा पंजा है। अच्छा डरती भी नहीं, कम से कम 12 फुट लंबी है। अगर रोड पे मिल गई तो वो मिलती रहेगी, चलती रहेगी। हाँ, इसे भागती आगे इन्हें डरेगी नहीं, बैठ जाएगी। इस वक्त इतना बेहतरीन कलर हो रहा है, बहुत बढ़िया। इस वक्त बहुत तेज है, कोई भी टाइगर मिलेगा आपको खूब चटक पटक मिलेगा। Do any of your children want to be a mahout? नहीं साहब, इस किस्म के तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ा लड़का हमारा एक कारपेंटर काम कर रहा है, ये बढ़ई का। उससे छोटा हाई स्कूल में है, उससे छोटा ऐसे पढ़ने पे 5 लड़के हैं और लड़की सभी पढ़ने में लगे। जी सभी पढ़ने में लगे। उनको हाथी के साथ नहीं कुछ नहीं सिखा रहे आप? इस किस्म के से तो अभी तक तो कोई इरादा नहीं है। अब आगे उनकी किस्मत है, क्या करते हैं। Subedar's son came to inform that a herd of spotted deer was crossing the dry river bed. Out came the binoculars, and there was Ali peering into it with as much enthusiasm as a first-time visitor to Corbett. Subedar Ali could be called a true inheritor of Jim Corbett's passion for wildlife. Talking to Ali made me realize the seriousness of the effort mounted by my country to save a magnificent but potentially deadly predator in close proximity to its citizens. For the tourists, tracking the pug marks of the tiger, the animal is becoming more and more elusive. Tigers won't ultimately be safe until they are worth more alive than dead. As the papaya serenades the setting sun at Corbett, I say a silent prayer that God must keep the beauty of this forest and the richness of the wildlife it supports intact forever.